Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start the topic Islamic community and the first people in the Islamic community, and we are going to start with Hazrat Abu Bakr Razillahu Ta'ala anha, and we are going to discuss the main events that happened during the life of prophethood. We are not going to discuss his caliphate because that's going to be discussed in the P2, and in the P1 we are going to just focus on his virtues, his blessings, and like his ranks and his life and all the things that he used to do. So we are going to start with Hazrat Abu Bakr Razillahu Ta'ala anha. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, he belonged to the clan of Banu Taym, and his name was Abul Kaaba, which was later changed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he got the name Abdullah. But he was famous for the name Abu Bakr. And why was he famous for the name Abu Bakr? It was because he was fond of camels. And Abu Bakr, basically, Bakr means a camel. So he was fond of camels. That's why people started calling him Abu Bakr. And what did he do? He was a successful merchant, and he had a place in society. Unka apna rank tha, and he was a successful and respectable person in the society. और उनके इखलाक भी अच्छे थे. इट वाज नॉट लाइक कि इस्लाम से पहले वो अल्लाह ने करे गुमराह थे या उनकी बैड प्रैक्टिसेस थी. ही वाज अ वेरी पायस पर्सन एंड ही लेड हिज लाइफ फ्री ऑफ करप्शन. ही डिड नॉट डू एनी करप्शन. ही यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम बैड स्टफ. उनके पास एक सेंस ऑफ रॉन्ग एंड सेंस ऑफ राइट थी इवन बिफोर एम्ब्रेसिंग इस्लाम. एंड उनकी खास बात ये है दैट ही वाज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And he has the rank of being the first male ever to accept Islam. The first person ever was Hazrat Khadija, and he is the first male adult who accepted Islam. And now moving on towards, हमने discuss कर लिया इनकी early life के बारे में कि he was a very nice person, उनका name ये था, ऐसा था, and he finally accepted Islam. Now we are going to share a little story how he accepted Islam. First of all, so he accepted Islam. He returned from his business trip basically, and he heard about the claims of his friend के उन लोगों ने उनको बताया कि आपके जो दोस्त हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं. Then हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, he went to Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब उन्होंने उनकी सारी कहानी सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सारा मांशा सुनाया, like about Hazrat Jibreel and about everything that happened in the cave Hira. He immediately accepted Islam, and he immediately believed in him, and that was how strong their bond was. And later Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये कहा भी that whenever I invited someone to accept Islam, they showed some reluctance obviously, but Hazrat Abu Bakr believed in me without hesitance. It means कि जब भी किसी और को उन्होंने इस्लाम की दावत दी, obviously बंदा सोचता है इतनी बड़ी चीज अपना मजहब छोड़ना obviously, तो उन सब लोगों ने थोड़ी देर ली, थोड़ा सोचा, एटलीस्ट सोचा. कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, बट द बेयर मिनिमम कि वो थोड़ा सोचते थे, एंड देन लेटर दे यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम. बट हजरत अबू बकर वाज द पर्सन जिन्होंने जो है वो इस्लाम को फौरन एक्सेप्ट किया. उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में फौरन ईमान लेकर आ गए. And what else he did, उन्होंने सिर्फ खुद इस्लाम नहीं लाया, he also started inviting other people in his social circle towards Islam. अब अगर कोई एक अच्छा इंसान होता है तो obviously उनकी कंपनी भी अच्छी होती है, and he started inviting people कि आप लोग भी इस तरीके से आए. And there were a lot of people who accepted Islam because of हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी दावत की वजह. बहुत prominent names आते हैं, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अबू उबैदा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ. जो ये names आ रहे हैं, they were really big names, and some of them were अशरा मुबशरा as well. तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कंपनी से पता चलता है उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे लोग उनकी कंपनी में थे, who also accepted Islam, और एक तरीके से इस्लाम को एक बूस्ट मिला, एक पेस मिली, like people started gathering. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इस्लाम में खुद भी एफर्ट्स डाली. द मोमेंट ही एक्सेप्टेड इस्लाम, वो दूसरों को भी इनवाइट करना शुरू हो गए, which showed his passion and which showed his sincerity towards the religion, right? तो उसके बाद उन्होंने what he did, he also bought many Muslim slaves and set them free. Since he was a successful merchant, he could do so. और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे slaves को फ्री करवाया था, जिसमें से हम जस्ट थोड़े बहुत नेम्स बता देते हैं, which is Hazrat Zunaira, Hazrat Lubana, and Hazrat Bilal. Hazrat Bilal की हमें स्टोरी पता है that how Hazrat Abu Bakr set him free and all of that, and Hazrat Ammar रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. तो इन slaves को जो बेचारे मक्का का टॉर्चर सह रहे थे, उनके साथ मुश्किलात हो रही थी, and all sorts of horrible things were happening to them. So Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु तआला अन्हा came and set them free, and he also did them a favor because later these people turned out to be really really great Muslims and really really productive citizens of the Muslim society, right? तो इसमें हजरत अबू बकर का जो अर्ली स्टेजेस है, अर्ली फाउंडेशन है, उसमें उनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल हम लोगों को नजर आ रहा है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कीप इट एट दैट. अभी हम लोगों ने जस्ट ये पढ़ा है कि उनका जो है वो चाइल्डहुड कैसा था, हाउ ही एक्सेप्टेड इस्लाम एंड व्हाट सर्विसेज डिड ही स्टार्ट डूइंग राइट आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम, राइट? लेकिन इसके बाद हम लोग जो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू शेयर सम इंस्टेंसेस वेयर ही प्रोटेक्टेड इस्लाम एंड हिज
basically he's born with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are going to discuss that, but we are not going to discuss that right now. You have to watch part two for that. Sorry. And yes, if you have any questions from this part of text, from this part of the topic, you can ask me. And like, if you have any further queries, or if you want me to give you guys feedback on anything related to Islamia, the labels, obviously. So you can do that. And yeah, we are done with part one of Hazrat Abu Bakr. Inshallah, I'll see you soon. Hopefully, you had a meaningful session, and go study now. Bye bye.